Hello, all the students. Welcome to Icon Careers. My name is Anil Chaudhary, and in this video, we people are going to talk about IPMAT Indore. We know that form filling process second Feb se start ho raha hai, students, and moreover, this is the time when you people have to understand the very nature of this exam. We will have to understand the kind of cutoff which IPMAT 2025 has, how we people have to prepare, and moreover, we need to understand the complete program also. Still, I believe that in this society, the kind of awareness which is needed about this particular program, that awareness is not there. I know many of the students अभी तक हम IPM के बारे में भी नहीं जानते, तो I think जिन बच्चों को पता है, it becomes the duty of those students to ensure that आप अपने दोस्तों को भी इस कोर्स के बारे में जरूर बताएं. मैं जानता हूं इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाए, but anyway students IPM को लेकर now there is a lot of opportunity available in this country. There are so many IIMs, there are so many private universities which are offering a 5 years integrated course. And I think if a student is very clear about making a career in the field of management, I think IPMAT and IPM is the talk of the town now. And IPM gives immense opportunity and a wonderful option. फ्यूचर में वापस कैट देने की झंझट नहीं. एक बार आप कॉलेज में एडमिशन लो और वहीं से BBA प्लस MBA बंद कर निकलो. एंड सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज, फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कैट देना हो, यू पीपल कैन स्टिल टेक, एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन स्विच द कॉलेज ऑल्सो. तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एक बार हमने एडमिशन लिया तो 5 years हमको स्टिक होना ही है. एवरी ईयर आई सी सो मेनी स्टूडेंट जो IIM इंदौर ज्वाइन करते हैं फॉर IPM, लेकिन कैट देते हैं. एंड इन केस इफ दे आर एबल टू गेट इनटू IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, तो पॉसिबली द स्टूडेंट्स स्विच ऑल्सो. तो हर साल ऐसे कुछ कई सारे बच्चे होते हैं जो स्विच भी करते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज IPM के बहुत एडवांटेजेस हैं. एक, इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी. आप चाहें तो 3 साल का ग्रेजुएशन करके स्विच करो. सेकंड, इट ऑफर्स सर्टेनिटी कि कैट नहीं भी दो तो उसी कॉलेज से अपना MBA तो हो ही जाएगा. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट IPM प्रोग्राम ऑफ IIM इंदौर एंड द एग्जाम ऑल्सो. सबसे पहला पॉइंट, हु इज गोइंग टू बी एलिजिबल टू टेक द टेस्ट. जिन बच्चों के एग्जाम्स 12th के 2024 में हुए, 25 में हुए, या फिर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द 12th बोर्ड इन 2026, you people are eligible to take IPMAT 2026. The condition is age limit born on or after August 1, 2006. तो इस हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करें तो मेजरली जिन बच्चों का 2024 या 25 में 12th हुआ है वो IPMAT दे सकता है, एंड 2026 जो देने वाले हैं वो तो एलिजिबल है ही. IPMAT इंदौर की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है स्टूडेंट्स. 2 Feb से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. 14th March इज द लास्ट डेट टू अप्लाई. लास्ट डेट का इंतजार मत करना. आई जनरली सी सो मेनी स्टूडेंट्स डूइंग दिस. एंड 4th May इज द IPMAT. तो दिन में 2 बजे से 4 बजे तक ये पूरा टेस्ट होगा, 120 मिनट्स का, डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ईच सेक्शन ऑफ 40 मिनट्स. एंड स्टूडेंट्स जो फॉर्म फीस है 4130 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 2065 फॉर द अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स. नाउ these are your role models. These are the iconites जो पिछले 1 या 2 सालों में they have been to the best colleges of India. Students, we proudly say, you talk about any college of India and you will see the students of ICON studying there. Wait a bit, from IIM Indore की बात करो, IIM रांची की बात करो, रोहतक की बात करो, you talk about Delhi University, SRCC, Shahid Sukhdev, plenty of colleges, and these are your role models. So that is the reason if you want to join for 2026 crash course, admissions have begun. अगर स्टूडेंट्स अभी से पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आर अवेलेबल. थोड़े दिन आप 12th के साथ भी अगर कंटिन्यू कर सके तो करने की कोशिश करो. थोड़ा सा बेस तैयार होगा तो उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा. एंड सेकंड स्टूडेंट्स, 12th के बाद तो फुल फ्लेजेडली आइकन का क्रैश कोर्स, वैसे भी स्टूडेंट्स नेशन वाइड रिनाउंड है, एंड हमारे क्रैश कोर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गेट द फैंटास्टिक रिजल्ट्स एंड they have been into the best colleges of India. So one batch we are going to start on 19th March, one batch will be starting on 29th March, and one batch we are going to start on 1st April. तो बस अगले 2 महीने 12th के बाद आइकन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाना, सब कुछ आइकन को दे देना, and then you see how you people get your dream colleges. Crash course admissions have begun. The numbers are there on the screen.
You people can get in touch with us, have a detailed counseling, and then you can join our program. चलिए अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पर, आईपी मैच एग्जाम पैटर्न। स्टूडेंट्स 120 मिनट्स का पूरा टेस्ट है and 120 questions will be there. 3 sections divided. Order of the sections already fixed. पहला section short answer type quantitative aptitude, जिसे commonly अपन मैथ्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स this is going to be the first section. Okay, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया, but this becomes the first section. Short answer type. What is the meaning of short answer type? Where options are not given to us. We will have to just type the answer. Students do understand. हमें कोई बहुत डिटेल में आंसर नहीं देना है, हमें कुछ समझाना नहीं है, अंडरस्टैंड, बट हमें सिर्फ आंसर को टाइप करना है. If the answer is 20, you will have to just type 20. The options are not given. ऐसे 15 questions आएंगे. Students, the very first section. So 40 minutes of time, and you will have 15 questions. The best part is, for this section, there is no negative marking. So the marking pattern is going to be +4 for each question. So there will be no negative marking. So 15 into 4, it becomes 60 marks. And last year students, IIM Indore say, to get a call for interview, what was the cutoff? Can you people guess? So 60 marks का ये पूरा section, and out of 60 last year the cutoff was 24 marks. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा 6 क्वेश्चन सॉल्व कर ले सही, कट ऑफ क्लियर हो जाता है. इसीलिए जिन बच्चों को लगता है कि सर आईपी मैथ का पेपर बहुत टफ होता है, बिलीव मी स्टूडेंट्स, इवन इफ द क्वेश्चंस आर टफ, इफ वी डू प्रॉपर सिलेक्शन, we can easily clear the cutoff. That is the mistake which majority of the students make. We have seen such students whose maths was average, but still they have cleared the cutoffs. For that, what is important is you will have to focus on selection. And here is where a very good team of mentors can make all the difference. So students, ये कट ऑफ था IIM इंदौर का. IIM इंदौर में हमें सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ को क्रैक नहीं करना होता है, सेक्शन वाइज भी हमें एक मिनिमम स्कोर करना होता है. तो दैट इज नोन एज द सेक्शनल कट ऑफ, अंडरस्टैंड. तो पहला सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप. सेकेंड सेक्शन इज अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, MCQ बेस्ड. इसमें भी स्टूडेंट्स, पीपल सी 40 minutes will be there and you will have 30 questions here. And students, out of these 30 questions, 25 questions will be based on mathematics, and 5 questions you will have one set of logical reasoning or data interpretation. And believe me students, वो जो 5 questions का set आता है, it is much manageable. हम तो हर बार स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जैसे ये सेक्शन स्टार्ट हो, डोंट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डोंट स्टक इन एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स. सबसे पहले ढूंढो वो 5 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग का कहाँ है, और एक बार स्टूडेंट्स वो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, which I believe that within 5-10 minutes हम कर ही पाएंगे. तो 20 मार्क्स तो वहीं पर हो गया. एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मार्किंग पैटर्न हियर? +4 -1. So 30 into 4, total marks 120. And last year students, the cutoff was, guess, सोचो क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर. IIM इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ. To get a call for the interview, the cutoff was only 28 marks. अब सोचो मैं 5 क्वेश्चंस का सेट वो सॉल्व कर लूँ, 20 वहीं आ गए. 2-3 क्वेश्चंस अगर मैं मैथ्स के और कर लूँ, I can still clear the cutoff for IIM Indore. This is what we need to understand. So if I talk about both the sections of quant, total 180 marks and the cutoff was 52. This is what we will have to do. तो स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, मैथ्स का बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं होता है. कट ऑफ ज्यादा क्या होता है? इंग्लिश में, विच इज द थर्ड सेक्शन, वर्बल एबिलिटी. हियर स्टूडेंट्स यू विल हैव ऑल क्वेश्चंस MCQs बेस्ड. हो सकता है 3-4 क्वेश्चन जो स्पेशली जंबल्ड पैराग्राफ्स वाले आते हैं, where 4 sentences are given to us, we need to arrange them to make a logical paragraph. केवल वो हमें टाइप करना होता है, अंडरस्टैंड. ओके, तो व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जंबल्ड पैराग्राफ वाले, ओके, इनमें शॉर्ट आंसर टाइप हमें आंसर को टाइप करना होता है, बाकी सब में MCQs. बट हियर स्टूडेंट्स, 40 minutes you will have 45 questions. The marking pattern is going to be +4 and -1 for all the questions.
इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कोई शॉर्ट आंसर टाइप भी है तो भी वहां पर स्टूडेंट्स देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1, बट डू अंडरस्टैंड 45 into 4 टोटल मार्क्स 180. 180 में से स्टूडेंट्स 2025 में व्हाट वाज द कट ऑफ? द कट ऑफ वाज 112 मार्क्स. यस. तो कई बार मैं कहता हूं लोग डरते मैथ से हैं, लेकिन कट ऑफ इंग्लिश का क्लियर नहीं होता. एंड स्टूडेंट्स 45 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश ये बहुत लेंदी नहीं होते हैं. अगर किसी भी स्टूडेंट का थोड़ा सा वोकैब ठीक है, ग्रामर का नॉलेज ठीक है, यस आईपीमैट में ग्रामर की इंपॉर्टेंस बहुत है, वोकैब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर. एंड देन इफ योर रीडिंग इज ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स वी पीपल कैन मैनेज क्रॉसिंग 120, 125, 130 इजीली. तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट इंग्लिश. तो कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ आईकन के स्टूडेंट्स क्वांट में दे हैव स्कोर्ड 125 आउट ऑफ 180, बट इंग्लिश में कभी कभी एक दो नंबर से रह जाते हैं. क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस. सर इंग्लिश तो हो ही जाएगा, मैथ्स टफ है तो थोड़ा ध्यान उस पर ज्यादा दें. बट दिस इज नॉट द वे. आपको बैलेंस्ड होकर चलना है. हमें ध्यान में रखना है कट ऑफ क्या है. हमें ध्यान में रखना है कि इंग्लिश में कम से कम 125 स्कोर करना है. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड हमें सिर्फ कट ऑफ को एक नंबर से क्रॉस नहीं करना है विद अ सफिशिएंट मार्जिन, बिकॉज once you people get a call for an interview, that does not mean that final selection हो ही गया. Because generally जो calls दिए जाते हैं वो 1:6, 1:7, 1:8 के रेशियो में होता है. And then students, the final merit list is prepared on the basis of this criteria. 65% weightage is given to IPMAT and 25% weightage is given to personal interview. And वो 65% में भी 25% MCQ वाले सेक्शन का, 25% शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन का एंड 50% वेटेज है वर्बल एबिलिटी का. इन सब के कैलकुलेशन को IIM इंदौर ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है. स्टूडेंट्स आप इस चैनल के साथ बने रहो, आपको सब कुछ बताऊंगा मैं. ओके, हमारी पूरी टीम बताएगी. ओके, और काफी सारे कंटेंट वीडियोस भी वी आर पोस्टिंग ऑन दिस चैनल. बस अपने सारे दोस्तों को जोड़ना स्टार्ट कर दो. हमने स्टूडेंट्स ऑफलाइन पिछले 20 सालों में बहुतों को पढ़ाया. एंड नाउ दिस चैनल इज अ न्यू venture to provide and to reach out across India. The students, when 65% weightage is given to IPMAT, इसका सीधा सा मतलब है हमें स्टूडेंट सब कट ऑफ को क्लियर नहीं करना है, सफिशिएंट मार्जिन. यूं मान के चलो कि 360 मार्क्स का पूरा पेपर है, हमें 200 लाना है. कितना लाना है? 200. तो 200 अगर अपन स्कोर कर पाए, क्लियर कट एडमिशन 100%. एंड इंटरव्यूज पूरी तैयारी आइकन करवाएगा. अंडरस्टैंड. एंड फाइनली स्टूडेंट्स टोटल 150 सीट्स होती है एंड जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है दैट रिजर्वेशन इज एनीवे अवेलेबल. तो स्टूडेंट्स गेट इन टच विद अस फॉर मोर डिटेल्स. चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों तक शेयर करो एंड क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करो. एंड जो बच्चे अभी 11th के एग्जाम्स दे रहे हैं 2027 के लिए, यू पीपल हैव कंप्लीट 1 year विद यू. दिस इज द टाइम व्हेन यू पीपल हैव टू किक स्टार्ट. जो बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं अभी आने वाले हैं 2028 के लिए, जस्ट आफ्टर द 10th बोर्ड्स वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट. स्टूडेंट्स बिकम द पार्ट ऑफ आइकन करियर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.